आइए स्टार्ट करते हैं अब इसका सैम्पल आंसर और साथ के साथ मैं आपको ये भी शो करूंगा कि कैसे आप मेरी स्पीकिंग बूस्टर बुक बाय करके इन सभी क्यू कार्ड्स का एक्सेस एक ही जगह पर ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस एज वेल एज पीडीएफ फॉर रिटन वर्जन. Well, inspiration is something that most people need, and if they get it by right person at right time, they can do wonders. हाय फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे. मैंने आपको कहा था कि क्यू कार्ड ऐसा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा. एग्जामिनर पूछ रहा है, अंबाला से हमारे एक स्टूडेंट से पूछा गया है. आपको भी डेफिनेटली प्रिपेयर कर लेना है. आइल्स स्पीकिंग बूस्टर ramanals.com वेबसाइट पर ये आपको आसानी से मिलते हैं. कैसे डाउनलोड करनी है ये बुक, ये आपको स्टेप्स अपेयर हो रहे हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में हम करेंगे इस क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर. वेल, क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ पर्सन हु इंस्पायर्ड यू टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग और टॉक अबाउट समथिंग योर फ्रेंड इंस्पायर्ड टू डू. वेल, the cues can be who the person is, for what he inspired, why he inspired, and what did you do afterwards or how did you feel about it. काफ़ी कुछ इसके लिए रियलिस्टिक बन सकता है. चाहे तो आप किसी के इंस्पिरेशन भी अपना यूट्यूब चैनल खोलें, लेकिन बात करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल, और वो रहेगी स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करना. आपका फ्रेंड जो है उसने आपको रिकमेंड किया, इंस्पायर किया इस एक्टिविटी को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन क्यों किया, इसके लिए डेफिनेटली कुछ वैलिड रीज़न चाहिए. सबसे पहले हम कहेंगे कि फोबिया. आपके अंदर वाटर फोबिया है, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, जिसकी वजह से आप पानी वाली प्लेसेस के पास भी नहीं जाते हैं. और वो बंदा जो बहुत घूमने का शौकीन है, कभी बीचेस, कभी लेक, कभी रिवर पर राफ्टिंग करता है, कभी कुछ करता है, तो उसने मुझे कहा कि आई मस्ट कम आउट ऑफ द फियर, और वो तभी हो पाएगा अगर मैं स्विमिंग सीख लूँगा, एंड उसके लिए मुझे स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी. दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं कि आपने फ्रेंड ने ये भी कहा कि इट इज़ वन ऑफ द फन एक्टिविटी स्पेशली टू एंजॉय इन समर्स, क्योंकि ऐसे पता ही है समर्स में वेदर बहुत हॉट रहता है, कोई भी और एक्टिविटी करने का मन ही नहीं करता, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है. तो दिस कैन बी रियली अ गेम चेंजर फॉर मी. अनदर थिंग हम जो ऐड करेंगे दैट इज़ हेल्थ पर्सपेक्टिव, क्योंकि फॉर सम टाइम आप थोड़ा सा लेथार्जिक एंड थोड़ा ओवरवेट फील कर रहे थे, तो आपके फ्रेंड ने आपको इस एक्टिविटी का एक और बेनिफिट बताया कि ये सबसे बेस्ट फिज़िकल वर्कआउट है, क्योंकि इसमें एक एक मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है. सो मैं ज़्यादा फिट रह सकता हूँ. एंड कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो एक्टिविटी है स्विमिंग, ये लाइफ सेविंग एक्टिविटी है. आप अपनी भी जान बचा सकते हो, दूसरों की भी जान बचा सकते हो, भगवान न करे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए. तो क्या लगता है कि काफ़ी कुछ है हमारे पास है, और यही करना होता है, एग्जैक्टली यही करना होता है. 1 मिनट का टाइम रखिए अपने पास, कुछ सोचिए कि क्या इसके बारे में मैं बोल सकता हूँ, एक एक करके रिदम में उसके बाद उन चीज़ों को प्रेजेंट कीजिए. लेंथ अपने आप डेवलप होगी. Thank you very much for following my channel, and if you are not a subscriber, please do subscribe the channel, hit the like button and leave some comments for me so that I can fulfill whatever you expect from me. आइए स्टार्ट करते हैं अब इसका सैम्पल आंसर और साथ के साथ मैं आपको ये भी शो करूंगा कि कैसे आप मेरी स्पीकिंग बूस्टर बुक बाय करके इन सभी क्यू कार्ड्स का एक्सेस एक ही जगह पर ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस एज वेल एज पीडीएफ फॉर रिटन वर्जन. Well, inspiration is something that most people need, and if they get it by right person at right time, they can do wonders. I would definitely love to share my personal experience when I got inspired by one of my friends. The fact is that my friend Karan is a great inspiration for me, and recently he inspired me to join swimming classes for so many different reasons. Let me tell you first that I have hydrophobia. I really cannot get close to water bodies like beaches, rivers, lakes, but
In contrast, my friend Karan is a travel bug who loves to visit places near water, and every time he shows me his pictures of sailing in a boat, rafting on river, enjoying at the beach, like activities like scuba diving, snorkeling, and he always tried to convince me to join him to such places, but because of my hydrophobia I really cannot do it. That's the reason why he motivated and encouraged me to join swimming classes in the sports center in my city. The fact is that he said that if I could learn swimming, I would never have the phobia anymore, because I can save my life if I would be in any kind of trouble. At the same time, swimming, as we know, is a life-saving skill, which means I can not only save my own life, but I can help people in trouble as well. Another reason for the inspiration was, for some time I was not feeling active and fit. I was feeling lethargic and I was putting up some weight. So Karan recommended me to surely join swimming classes, because it is one of the best activity to stay fit and healthy, because it involves the movement of each and every muscle. Interesting thing is that he said that it is the best thing to do, especially during the summers. As we know, during the hot summer days, we really do not feel like do anything because of the sweating, and swimming is one thing that can really help us to get relief from the scorching heat. I was really inspired with his talks, and he definitely convinced me to join the sports center in the city, and now I have learned to swim to a great extent and I have no more hydrophobia, and the credit goes to my friend who inspired me. And that's it. I hope once again you followed the sample very comfortably, and if you want to add or minus anything out of it, you are most welcome to do it. But don't forget to subscribe my channel and follow me, and practice and prepare for the IELTS exam.